Okay, so quickly I thought of making this video, a very quick video, 3 lens recommendations for the Nikon Z50 Mark II to make it a perfect budget wildlife sports action camera. ठीक है, कैमरा बॉडी का प्राइस है 78,000 रुपीज़, ग्रेट ऑटो फोकसिंग सिस्टम, 11 FPS, 30 FPS in JPEG with 1 second pre-release, perfect for wildlife sports action offering from Nikon at a very great budget price point. एंट्री लेवल कैमरा है, बहुत केपेबल है, ऑटो फोकस बहुत अच्छा है, बर्ड AF, बर्ड के आइज पे फोकस करेगा, एरोप्लेन ऑटो फोकस ट्रैकिंग, मल्टीपल मोड्स है, एरोप्लेन व्हीकल, इट हैज़ ऑल द वर्क्स. ठीक है, 3 लेंस रिकमेंडेशन है क्विकली. Tamron 150-500, my favorite recommendation. I would go with this. Lens cost somewhere around 1 lakh rupees. 1 lakh rupee lens plus the Z50 Mark II, 78,000 रुपी बॉडी, 1,78,000 में परफेक्ट किट जिसके ऊपर आप ग्रो कर सकते हो, अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हो. This 150-500 millimeters Tamron lens is a variable aperture f5 to f6.7. It's good, not a problem with that at all. And it is a Z mount lens. So because it is a Z mount lens, आपको कोई adapter use नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. The second lens recommendation is the old Nikon F mount 200 to 500 millimeters lens, which is a fixed aperture f5.6 lens. All the way through the zoom range, you will have f5.6. Great for lower light situations like early morning and the evenings, जब आपको बर्ड्स शूट करने चाहिए, क्योंकि उस टाइम का क्रॉस लाइट बहुत अच्छा होता है फॉर शूटिंग वाइल्ड लाइफ बर्ड्स एंड एवरी अदर थिंग, राइट. ये लेंस आपको पड़ेगा आज ब्रांड न्यू 85,000 अराउंड ऑन अमेजॉन. पर इसको अडेप्ट करने के लिए आपको एक 15,000-12,000 रुपये का अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, F2Z अडेप्टर, विच अगेन ट्रांसलेट्स टू 1 लाख रुपये का प्राइस पॉइंट. तो 1 लाख में आपको Z माउंट लेंस भी मिल रहा है, आर्ग्यूबली आई फील विथ better quality glass and better autofocusing, the Tamron system, right? 150 to 500 on the Tamron, 1 लाख में वो भी मिलता है. 1 लाख में with the FTZ adapter आपको 200-500 लेंस भी मिल रहा है, निकॉन का पुराना वाला F mount lens. तो you make the choice. I will personally go with the Tamron one. Now the third lens recommendation is something that really changes everything. It is a very expensive lens compared to these two lenses. Completely internally zooming. So because it is internally zooming, nothing protrudes out or comes out of the lens, moves really, which is why it has better weather sealing, but it is also a bigger lens. So carry करने के लिए और heavy भी है ये lens compared to both of these two lenses. Actually the Tamron lens is very comparatively lightweight, तो कैरी करने के लिए ईजी है, छोटा भी है तो कैमरा बैग में ट्रैवल करने के लिए भी ईजी है. तो मैं तो Tamron ही रिकमेंड करूँगा. पर अगर आपको ये लेंस लेना है 180 to 600 millimeters Z mount lens f5.6 to f6.3, तो Tamron से बहुत अलग एपर्चर फिगर्स नहीं है. इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल एपर्चर लेंस, ऑलमोस्ट सेम लेवल का है. ग्लास की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इट इज़ अ NIKKOR ग्लास, प्रॉपर निकॉन का फर्स्ट पार्टी ग्लास है. आई फील लाइक ऑटो फोकसिंग माइट बी बेटर दैन Tamron's on this lens. Other than that, I don't see any major advantages. Of course, how did I miss this? 100 millimeters more reach. With your DX crop sensor camera, these other 500 millimeter lenses on the long end will give you an equivalent field of view of 750 millimeters because 1.5 times crop factor, right? This 600 millimeters on its long end, the 180 to 600, will give you 900 millimeters equivalent on full frame with its 1.5 crop factor that the crop sensors of Nikon have. That means आपको 900 millimeters का reach मिल रहा है at f6.3. This reach is very important for some people. तो अगर आपको वो additional reach चाहिए, 100 millimeters is a बड़ा reach है, ऐसा नहीं है कि छोटा है ना, 50-30 millimeter का बात नहीं है, 100 millimeter का बात है. तो अगर आपको extra reach चाहिए, you go with this lens. You want more durability, you want more, ऐसा नहीं है कि बाकी lenses weather seal नहीं है. अगर आपको extremely अच्छा एक high degree of weather sealing चाहिए तो आप ये लेंस ले सकते हो. इज इट वर्थ 50,000 रुपीज, दैट एडिशनल 100 millimeters एंड दैट एडिशनल बेटर वेदर सीलिंग बट वर्स हैंडलिंग या फिर ज़्यादा वेट? दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. पर्सनली आई विल गो विद द Tamron considering my specific needs. Again with the 180 to 600 millimeters, if you upgrade in future to a full frame camera, let's say the Z6 Mark III or the Z8 or the Z9, you will have a lens that feels the part, that feels professional, and also you will have 600 millimeters फोकल लेंथ ऑन योर फुल फ्रेम कैमराज. तो अगर आप 500 mm पे 750 एंजॉय कर रहे हो क्रॉप सेंसर पे, जब आप फुल फ्रेम पे जाओगे तो आपको 500 ही मिलेगा. पर जब आप 600 को 900 भी एंजॉय कर रहे हो फुल फ्रेम में आप जाओगे तो आपको कम से कम 600 तो मिलेगा. तो
वैसे आप सोच सकते हो कि एज अ पाथ फॉर अपग्रेडिंग टू फुल फ्रेम कैमराज, इफ यू वांट दैट 600 millimeters reach even when you go to full frame, then you should definitely go with the 180 to 600 if you have the budget for it. So those are my recommendations. 3 lenses, 1 great camera. ये recommendation मैं पहले कर ही नहीं पाता if the Z50 Mark II had not come out with this great autofocusing system and the Speed 7 processor. I could not have recommended this setup. I would have to have recommended at least a Z6 Mark III, which would have completely changed the pricing equation. ठीक है? So we are very lucky that we have this camera now. और अगर आपको आज एक बजट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सेटअप करना है, बजट कॉम्बो बनाना है विद अ निकॉन कैमरा, you can finally do it with the Nikon mirrorless cameras like you could do earlier with the D500 and the 200 to 500 millimeters. The old days are finally back. Great, that's it. Quick short video. I hope मुझसे छोटे वीडियो बनते नहीं है, and meet you in the next one.